Alright, Bismillah. Okay, so we are live, guys. Assalamu alaikum, everybody. I hope you all are doing well. And this is the third video or perhaps live class of our past paper session. I again and again say it as past paper session. It's basically the topical session, topical past paper session. And today, inshallah, we're going to be starting off with chapter number 2, which is data transmission. My bad. I always mix this. Data representation is chapter number 1, where we basically studied how you can represent the data which we have in our day-to-day life in computers. So like how can you store binary numbers and all that stuff, text file, images, audio files, videos, and all those things. And inshallah, in today's class, we were going to be diving into how you can basically transmit the files. So how can you send the data from your computer to the other computer? What sort of wires are being involved in this transmission? Kya kya tarike kar hota hai and all that stuff. So just like the previous two classes, we are going to be starting off with the summer 2025 ka paper, inshallah. So let's start off with summer 25, May, June 2025, question paper 12. We are just going to be doing questions related to chapter number 2, and I hope this ends soon. ये इतना complex वो नहीं है. And apart from this, I do expect you guys कि आप लोगों ने जो मैंने आप लोग को वीडियो कल शेयर की थी, you would have watched that. It was also pretty much very comprehensive क्योंकि उसके अंदर हमने काफी अच्छी अच्छी चीजें ना वो की थी. अब इसके अंदर let me see if there is a question on this concept. If not, we can skip off. But yeah, I guess we do have one. Okay, so we have this one question related to chapter number 2. जिसका सिर्फ C part is for chapter 2. If we look up at the first two parts, this is basically your chapter 6, chapter 4, and then this is also 4. And from part C you have 3, and then part C 2 onwards till part 3 आपके पास आ रहे हैं topic number 2 ka content. Say, so inshallah we are going to be looking into this question. Before moving on, I want a quick confirmation. Can you guys see the screen clearly? And also, is my audio clearly audible? Yes or no? Anyone quickly in the chat, just confirm it. All right, perfect. So ab ye question bol kya raha hai? This question is basically talking about firstly ke data transmission method. So now what happens is that when you have a computer, उसके अंदर when you want to transmit data, it can transmit data through multiple ways. And उसके लिए एक ये बात होती है कि your computer basically can do it through sort of एक दो methods है हमारे पास. अब वो जो methods आ रहे हैं, I am expect that you guys are aware of it, but ये जो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करने वो हमने ये करना है कि यार कौन सा ट्रांसमिशन मेथड यूज होगा एंड वो क्यों यूज हो रहा होगा. सही. तो अब वो हमें ये बोल रहे हैं, the question states, programmer needs to connect the printer to her computer. Okay, so there's a programmer who wants to connect the printer to her computer. पहले बार में तो बोल रहा क्या printer होना चाहिए. This is chapter number 3. इंशाल्लाह इसको हम बाद में देखेंगे. The printer is on the same desk as her computer, which basically indicates and tells us कि यार it is pretty much very close. ये बोलना चाह रहे हैं. अब वो बोले give a suitable method of that could be used to connect the computer to the printer. अब हमारे पास इसके अंदर ना एक जल्दी अगर आपको मैं बताऊं, we have something known as serial, and then we have something known as parallel. And then we have something known as, पहले ये दो है and फिर अब सीरियल क्या होता है. सीरियल ये होता है कि यार आपके एक वायर यूज हो रही है जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफर हो रहा है. सही. A single wire. So if I might have a computer up here, so this might be my PC, and let me just zoom in a bit. This might be my PC, and this wire is connected to my PC, and then there is my printer. Okay, and it's connected to the printer. So I'm like sort of sending data एक time में एक bit जा रही है. So like if I have to send one file, एक file यहाँ से transmit हो रहा है, and it goes to the printer where it gets print out. And till that point, if I have any other file to print out, तो वो यहाँ पे इतना wait कर रहा होगा, which is usually the case for printers. आप लोगों ने देखा होगा, when you print something, it goes into the buffer zone. अब buffer क्या है? Again, you're going to be studying that in chapter 4, inshallah. But buffer आपके डेटा को टेम्पररी स्टोर कर देता है. सो लाइक टेम्पररीली इट टेल्स यू कि यार योर डेटा फाइल इज बेसिकली विद इन द वेटिंग लिस्ट, एंड अनलेस इट रीचेस इट्स स्पेसिफिक, इसकी अपनी बारी नहीं आती, इट्स टर्न, तब तक वो वहां पे वेट करेगा. एंड वंस इट गेट्स इट्स अपॉर्चुनिटी टू बी प्रिंटेड, तो वो इस तरह वायर के थ्रू जाके प्रिंटर से प्रिंट आउट हो जाएगा. दिस इज सीरियल. But then we have one other method which is known as parallel. Now what parallel does is कि वो एक टाइम के अंदर, like let's say this is my computer and then this is my printer.
you might be able to print multiple documents at once. So what if I tell you, yeah, I have a printer which can sort of print one page yahan se, and then there is this other printing slot available up here जिससे एक दूसरे पेज भी प्रिंट हो सकता है, एक यहाँ से प्रिंट हो सकता है, एंड यहाँ पे फोटो कॉपी वाली मशीन भी है तो एक तीसरा भी हो सकता है. So if I can send multiple files to be transmitted or at the same time over a single wire, then that's known as parallel. Perfect, Rayan, बिल्कुल. Now ये तो हमारे पास दो डेटा ट्रांसमिशन के मेथड्स आ गए, बट इसी के अंदर वो आपको ये भी बोले कि आपने एक्सप्लेन करना है कि यार और कौन से वो हैं. तो जब भी हम डेटा ट्रांसमिशन का मेथड करते हैं ना, इसके अंदर हम दो चीजें बता दें. एक तो हम ये बात करते हैं कि यार आपने कितनी वायर्स यूज करनी है, सो नंबर ऑफ वायर्स. जब हम नंबर ऑफ वायर्स की बात कर रहे होते हैं तो वी ओनली हैव टू डिस्कस सीरियल और पैरेलल, व्हिच बेसिकली मींस वेदर यू वांट टू गो विद अ सिंगल वायर और मल्टीपल वायर्स. सही है, ये आपके मेन बेसिक वो आता है. देन इसके बाद आपके पास जो सेकेंडरी चीज आती है वो ये आती है कि यार जो आप डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं, डू यू वांट इट टू बी इन अ वे दैट योर कंप्यूटर इज ओनली सेंडिंग डेटा टू द प्रिंटर, okay? Yeah, do you want it in a way where both computer can send data to the printer and at the same time the printer can also send data to the computer? Like for instance, अगर हमें इस तरह की डिवाइस चाहिए जिसके अंदर यार I like अब इसके अंदर for what this specific example I gave my students the example of mouse when discussing it if I'm not wrong. उसके अंदर I explained this one thing कि यार आप लोगों ने देखा होगा कि माउस के अंदर, I don't have a mouse with me right now, but अगर आप माउस के ऊपर क्लिक करते हैं, you are always going to note कि यार आप जब भी माउस को मूव कर रहे होगे, the computer is going to get a signal, which means कि आप कुछ कर रहे हो which is transmitting signals to the mouse. To the mouse, and then the mouse is transmitting signals to the computer. But it's never the other way around where आपका computer आपको कोई signal देना चाहता है and आपके mouse के ऊपर वो denote होगा. So a mouse is a simplex transmission method. अब what's a simplex one? A simplex transmission method is basically the one जिसके अंदर आप ना सिर्फ एक डायरेक्शन में data send कर रहे होते हैं. So like in this scenario, I might say कि data is only going from computer to the printer. Then we have this other example, like यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ, this is simplex, okay? Then we have this other example जिसके अंदर what if I have to send data from computer to the printer and also from the printer to the computer? An example could be what if I tell you कि यार I have a RGB mouse, you know those gaming mouses, but those gaming mouses also from like some top notch gaming company like maybe Logitech, and उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा when you buy and purchase a top notch such gaming quality mouse, तो आपके पास कंप्यूटर के ऊपर एक उनका अपना स्पेसिफिक पोर्टल आता है, and you log on to that application and you can change the colors. So what happens is कि यार if you have a mouse up here, this might be a mouse, so you have the buttons up here, and then you can connect that to a computer, okay? So when you move this here and there, it's going to transmit signals, and we see that the cursor on our screen, it is moving here and there, all clear. But this sort of transmission is what we call a simplex one. But अगर मैं आपको ये बोलूं कि यार the computer is also sending some sort of signals to the mouse, how? Maybe if you select the color as green, तो आप देखोगे यहाँ पे आपका सारा का सारा जो what do we call it, mouse है, उसके अंदर green color आ गया. But the moment you change it to maybe red, you're going to see that the color is going to go shift to red. अब ये क्या हो रहा है? It is basically a sort of transmission in which the computer is sending signal to the mouse, and at the same time mouse is also sending signals to the computer. So आपके multi transmission हो रही है. So whenever we have multi transmission, उसमें दो चीजें आती है. Such transmission is basically known as duplex transmission. But duplex transmission can further be broken into two types. एक को हम बोलते हैं half duplex, and then the other one is known as full duplex. So half duplex is the one जिसके अंदर आप एक टाइम के अंदर you can either send data or you can receive data. You cannot do both of them at the same time. So for instance, if I say कि यार अगर आप एक टाइम में या माउस को यूज कर सकते हैं and you cannot change the colors, or what you can do is कि आपने माउस को हाथ नहीं लगाना, then you can maybe enter a command on keyboard which can change the color. But दोनों एक साथ नहीं हो सकते. If we have a transmission like this जिसमें दोनों एक साथ नहीं हो सकते, that's known as half duplex. But if we have a transmission जिसके अंदर you might be able to, let's say, have both transmission at the same time, then that's known as full duplex. Like for instance, if I'm calling you guys on WhatsApp or some, like even at this Google Meet session, if I'm speaking at this point, and let's say someone of you, maybe Rayan opens up his mic और वो भी कोई बात बोले, तो you're going to see that
you can hear my voice and at the same time I can hear your volume and voice at the same moment. So एक ही time के अंदर दोनों चीजें हो रही है. This is what we call as full duplex transmission. सही है? So अब हमने ये तो देख लिया कि what is half duplex, full duplex. अभी let's come to this question where it says कि यार आपने ना data transmission करनी है तो आप कौन से method के साथ जाओगे. So in a scenario like of that of a printer, it's usually जो आपके chapter 2 के questions है उसके अंदर एक ये leniency वाली बात होती है. If you can justify your point, आपको mark मिल जाएंगे. So like maybe if I have to go with simplex, serial simplex, so that's fine for me if I can justify it. But if someone of you might be like, no sir, we want to go with like maybe parallel. Why? क्योंकि आपने उसको define कर दिया कि I want to go with parallel for this reason, तो आपको उसके भी correct marks मिल जाएंगे. So you don't need to worry, the examiner is always there to support you. But in a scenario like that of what do we call it, printer, remember it's always advised to go by serial. Why? क्योंकि आप याद रखो जब हम सिंगल वाइड यूज करते हो उसके अंदर एक बेनिफिट ये कि if there is one file coming up, then there is second file, there is third file, there is fourth file. You're going to note that all these files are going in order. And when files are going in order, they do not get disarranged. And जब वो arranged order में होते हैं तो हम ये बोलते हैं files are not skewed. This is one of the keywords जो कि आप marking scheme में भी देखेंगे, which basically means the point कि आपके files जो है they are in order. So इसलिए what I will be doing is कि मैं बोलूंगा कि यार मैं serial use करूंगा, serial transmission, but this is only going to get me like 1 mark. Why? Because I have to explain the full method. यार मैंने serial कौन सा use करना है, whether I have to go with serial simplex, serial half duplex, serial full duplex या क्या. So for me, if I am purchasing a printer, if I have a printer in my home, it has to operate in a way कि यार where I can only send data to the printer, and it's not like printer मेरे कंप्यूटर में कुछ भेजे. हाँ भेजना चाहे तो there is possibility. Let's say मैं बोलूँ कि यार आपने कोई प्रिंटर लेना है जो कि आपके कंप्यूटर को एरर भी भेज सके, तो अगर एरर भेजने की कैपेबिलिटी आपके प्रिंटर में आती है तो in that scenario it becomes like there is a possibility that you can make use of full duplex or half duplex. But in a scenario of that of mine where I'm just saying I have a printer which can only receive data and उसको एक ही गो में करना है कि या फिर चलो let's be a bit realistic. We have a computer, say, and let's say we send data to a printer. And sometimes what happens is कि अगर आपके पास it runs out of pages, you will note कि यार आपका कंप्यूटर जो है वो आपके सॉरी आपका जो प्रिंटर है वो जाके आपके कंप्यूटर को एरर भी देगा. एंड वो एरर में आपको क्या बोलेगा, वो आपको बोलेगा कि यार आउट ऑफ पेजेस या फिर पेज ऐड कर दिया, something like that. So this means कि यार while your file is being transmitted from the computer to the printer, there is also possibility that the printer also sends some sort of signal or data to the computer. So whenever we have a scenario like this, तो हम उस केस में यूज करेंगे duplex. लेकिन अब full duplex यूज करना है या half duplex. So in a scenario like this, I would recommend you making use of हाफ डुप्लेक्स. वाई? क्योंकि हमें एक टाइम के अंदर दोनों को नहीं यूज करना, हमने या फुल डुप्लेक्स यूज करना है या हाफ डुप्लेक्स यूज करना है. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डू विद सीरियल हाफ duplex. And if I write this, I'm going to get 2 out of how many marks? 6 marks. So I get 2 out of 6 marks. And now I have to write 2 points and explain कि यार why serial and serial होता क्या and followed by why half duplex और वो होता क्या है. So अगर मैं इसको बताऊं तो सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, I will be like okay, क्या कहते हैं, मैंने सीरियल यूज करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आई हैव टू एक्सप्लेन. तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ये लिखूंगा कि यार द बिट्स, द सीरियल ट्रांसमिशन विल इंश्योर ट्रांसमिशन, एंड यहाँ पे जाके मैं बताऊंगा विल इंश्योर दैट द बिट्स. अब यहाँ पे द बिट्स, द वर्ड बिट्स इज एन इंपॉर्टेंट थिंग. ये मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ ना, दिस इज अ कीवर्ड. अपने एग्जाम में इस तरह के कीवर्ड्स मिस नहीं करने, एग्जामिनर इन्हीं को ही देखेगा. सही है. विल इंश्योर दैट द बिट्स आर सेंट इन एन ऑर्डर. अब इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि यार द bits would not be skewed or maybe there are less chances for errors. So as a result of which the bits would not be skewed. Skewed का मैंने आपको पहले ही बता दिया, मतलब out of order, and there will be less chances of error. There will be less chances of error. And so when I write this, you're going to see that I have completed almost half of the examiner requirement, which means I'm getting 4 out of 6.
Now, how do I get the remaining 2 marks? So for that, I'm going to be now explaining the half duplex part कि यार मैं क्यों half duplex यूज करना चाह रहा हूँ, क्या वजह है. तो अब देखो, आपके पास अगर जहन में पॉइंट नहीं आ रहा कुछ, तो जस्ट राइट एनी रेलिवेंट पॉइंट. अब यहाँ पे मैं आपको ये बोल रहा हूँ, एग्जामिनर ने कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि आपने कितने पॉइंट्स लिखने हैं. सो इट्स अप टू यू. इफ आई हैव टू गो विद लाइक मे बी 5 एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स, आई कैन आल्सो डू दैट. व्हाई? क्योंकि करेक्ट हुआ तो मार्क्स मिल जाएंगे. लेट्स से कोई एक मेरा और गलत होता है, तो उस सिनेरियो में इट कैन रिप्लेस दैट. बट अगर आपको एग्जामिनर क्लियरली स्पेसिफाई कर देता है दैट यू ओनली हैव टू यूज दिस मेनी पॉइंट्स, तो फिर उससे आपने आगे नहीं जाना. अदरवाइज यू गोना बी लूजिंग मार्क्स बिकॉज ओनली द फर्स्ट n नंबर जो भी वो स्पेसिफाई करते हैं, फर्स्ट 2 करते हैं, तो फर्स्ट 2 विल बी मार्क्ड. सही. सो नाउ टू एक्सप्लेन द सेकंड पार्ट व्हिच इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट हाफ डुप्लेक्स. तो हमने सबसे पहले तो ये बता दें व्हाट इज हाफ डुप्लेक्स. तो यार हम बता देते हैं the serial transmission will show that the half duplex is used. The half duplex is used so that the data is sent in both directions. एंड व्हाई डू वी नीड दिस? जो अभी हमने एग्जांपल डिस्कस की थी कि यार मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कोई कंप्यूटर को सिग्नल चाहिए हो फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द प्रिंटर साइड, व्हिच विल बी लाइक देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर can be an interrupt or maybe a notification of error that we might want the computer to look on into. So I can say कि यार for the half duplex is used so that the data is sent in both directions, so that any interrupt or notification of error can be sent to the computer. And this marks a perfect 6 on 6 answer for your CIE. समझ गए? So this is how you're going to be approaching each question. आपने identify करने, one tip generally for all sciences too and also for computer science is to see कि आपके number of marks कितने हैं. The number of marks is directly equal to the number of points you have to mention. So अगर इस सिनेरियो में we see कि हमने serial और half duplex यूज करना है, क्लास हो रही है, serial and half duplex यूज करना है, तो in a scenario like this what we can do is कि एक नंबर हमें पता है सीरियल का मिलेगा, एक हाफ डुप्लेक्स का. एंड इफ आई वाज इन एग्जाम आई माइट हैव इवन काउंटेड दिस एज 1 मार्क वाला पॉइंट. इसको मैं ना एक ही पॉइंट ले लेता, लाइक अब यहाँ पे एग्जामिनर आपको 2 दे रहे हैं, बट फॉर मी दिस माइट हैव बीन अ सिंगल पॉइंट. तो मैं क्या करता, मैं नीचे एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख देता एंड व्हिच आई वुड आल्सो एडवाइस कि लिख दो. अगर कोई इनमें से कोई वेग हुआ तो इफ यू हैव एन एक्स्ट्रा पॉइंट रिटन यू आर गोना बी गेटिंग मार्क्स. बट ये नहीं है कि आपके 6 मार्क का क्वेश्चन है, आपने 8 सही लिखे, सो यू एक्सपेक्ट दैट यू गोना बी गेटिंग फ्री बोनस मार्क्स. That's not how it works. Now we are done with this part. Now let's look into the third part, जो कि आपके error checking के ऊपर आ गया. And now that is saying कि यार an even parity is used to detect errors in the data after it has been transmitted to the printer. Describe how an even parity check detects an error. Now in your paper, chapter number 2, you're going to be learning about error detection. एरर डिटेक्शन के हमारे पास काफी मेथड्स है व्हिच आई होप इंशाल्लाह के इन द नेक्स्ट 2 इन टुडेज क्लास एंड कल की क्लास, कल तो हैव टू सी अगर होती है, बट आई विल ट्राई कि इंशाल्लाह हो जाए. लेकिन जो हमारी ये 2 क्लासेस के अंदर हम डिस्कस करेंगे एरर डिटेक्शन के मेथड्स, उनके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप लोग ने अंडरस्टैंड करनी है. दैट इज बेसिकली कि जो आप फाइल्स भेजते हैं ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी उसमें एरर आ जाए, बट हाउ कैन यू सी कि यार एरर आ गया? उसके लिए काफी मेथड्स है. वन ऑफ दोज मेथड इज बेसिकली पैरिटी चेक. अब व्हाट पैरिटी चेक इज कि व्हाट इफ आई से कि यार मेरे पास एक रजिस्टर है, say it is storing 4 values, 4, say so 1 0 0 1, and I'm sending this data from, let's say, किसके कंप्यूटर से, कुरतुलैंस computer, Kurat, what's the spelling? It's Kuratulan. Okay, Kuratulan's PC, and I'm sending this to maybe the PC of यहाँ पे और कौन है क्लास में, Ishal. Okay, so let's say we are sending it to Ishal's PC. बट दरमियान में वी नो कि यार जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है दैट्स बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट, एंड देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि यार डेटा कहीं पे लूज हो जाए या फिर कुछ एरर आ जाए या एनी सच प्रॉब्लम कैन हैपन. सो how can Ishal confirm कि यार the data which I received at my computer it's equivalent to what Kuratulan was initially planning on sending?
तो उसके लिए वी आर मेकिंग यूज ऑफ एरर डिटेक्शन। अब पैरिटी चेक क्या करता है, पैरिटी चेक में ये होता है कि बोथ द यूजर्स, सो लाइक Coratelan as well as Ishal, they agree on a specific parity, so they might be like okay we might want to use even or odd parity। अब उसका मतलब ये होता है कि जो Coratelan ने अपनी फाइल भेजनी होती है उसके अंदर she has to count the number of ones, वो काउंट करेगी कि हाउ मेनी वंस डू आई हैव, वन टू, शी हैज टू वन व्हिच इज बेसिकली एन इवन नंबर। अब अगर यहाँ पे कुरतलैन क्या करेगी, शी इज गोइंग टू ऐड वन एक्स्ट्रा बिट बिहाइंड द एक्चुअल फाइल जिसको बोलेंगे पैरिटी बिट। ओके, दिस इज नोन एज अ पैरिटी बिट एंड दिस बिट इज बेसिकली यूज टू इंश्योर कि यार जो हम फाइल भेज रहे हैं ना उसको एक स्पेसिफिक इवन या ऑड नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाए। मतलब इस बात का ये है कि अगर मैं ये बोलूं कि दोनों यूजर्स ये बात एग्री करते हैं, चलो इसको हम जीरो कर देते हैं फिर आपको बेहतर समझ आएगी, कि अगर दोनों यूजर्स एग्री करते थे कि वी नीड टू मेक यूज ऑफ even parity like the examiner said, so अगर I have to make use of even parity तो इसका ये मतलब है कि कुरतलैन ने सबसे पहले जो अपनी फाइल है इसको even बनाना है। so what she has to do is she will count the number of ones जो कि इस सिनेरियो में कितने हैं 1000, so we see that she has only one single one, right? So one is an odd number। अब जब उसका odd number one आ रहा है, number of ones are odd in nature, but we need to ensure कि the number of ones are even in nature, तो हम करेंगे क्या, we are going to set this parity bit to either a zero or a one depending upon कि यार जो number of ones है वो इससे even या odd होते हैं या नहीं। So like अभी हमारे पास number of ones are of odd nature, but हमने ये देखा है कि we want them to be in even nature, so what I will do is मैं यहाँ पे एक one add कर देता हूँ। And when I add one, you're going to see that the number of ones are basically how many? They are now two, which is basically even. And this agrees to the parity जो कि हमने originally set की थी. Now what's going to happen is we will be sending this file to Ishal's PC. And let's say on Ishal's PC, when the file comes up, say वो इस तरफ 5 bits के अंदर पहुंचेगी 1 1 0 0 0। So what Ishal is going to do is कि वो भी number of ones को count करेगी। She'll be like okay 1 1 0 0। So we have two ones। So two ones का मतलब है two is even, right? So हमने even ही की थी, even में ट्रांसलेट हुआ, hence no errors। बट अगर मैं ये बोल दूं कि इशाल के कंप्यूटर के ऊपर rather than being translated like this, आपने Coratelan also send the data to maybe किसको भेजा है, लेट्स से हम बोल देते हैं अजान को भेजा हुआ है, सही है। सो अगर उसने अजान के पीसी के ऊपर भी डेटा भेजा हुआ है एंड ऑन अजान पीसी, अजान अजान्स पीसी, उसके ऊपर ये हो गया कि द 5 बिट्स 1 2 3 4 5, इसके अंदर द डेटा अराइव्ड इन अ वे कि आपके पास 1 0 0 0 0 आया। So now what Azan is going to do is he will be counting the number of ones and he's going to see कि यार I have single one which is basically odd in nature, but eventually the file which was transmitted वो तो even parity की थी। So even is not equal to the odd which Azan gets, which basically proves that there is some sort of an error। And this is a very quick and basic overview of what even and odd parity and what those basic parity checks all operate upon। And आपने ये तरीका यूज करना होगा to indicate कि यार कोई error है या नहीं। अब ये जो process हमने यहाँ पे की है, the same thing is being asked here in the exam, where they say कि an even parity check is basically used to detect errors। And now वो बोल रहा है कि यार आपने even parity check यूज करनी है to detect an error, and वो किसके लिए, when the data is being transmitted to the printer। So now what we need to explain here is कि हमने बताना है कि यार सबसे पहले तो हमने क्या ऐड करना है, हर फाइल के साथ हमने एक पैरिटी बिट ऐड करनी है। व्हाट इज दैट पैरिटी बिट, दिस स्पेसिफिक पार्ट, ये देख रहे हो दिस वन, कि यार अगर ओरिजिनली अब यहाँ पे 1 है लेकिन हमने इवन कर दी है तो 1 करेंगे। बट व्हाट इफ अगर मैं ये बोल दूं कि यार नहीं ये मैंने ऑड पैरिटी सेट करनी है, अगर ऑड पैरिटी सेट करनी है तो क्योंकि मेरे पास ओरिजिनली नंबर ऑफ वंस आर आल्सो ऑड इन नेचर, फिर मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगा, सही है। तो इसका आप लोग को पता होना चाहिए। अब यहाँ पे यही प्रोसेस को मैंने सारा एक्सप्लेन करना है इन द 4 मार्क स्टेटमेंट। अब सबसे पहले तो मैंने ये बताना है, आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट, यार कौन सा कलर लूं, लेट्स गो विद दिस। सबसे पहले मैंने बताना है दैट वी आर गोइंग टू बी मेकिंग यूज ऑफ अ पैरिटी बिट, राइट? सो a parity bit is added to byte each byte। And why am I saying byte? Because if you took that day's class, मैंने बताया था that basically 8 bits are all together known as a byte। So if you see we have a whole bit, in this scenario it's a 4-bit, but usually it's like a 8-bit long register, 3 4 5 6 7 8, and based on that ले लो easy। But based on that, if you have to basically, so this is what we call as a byte, say this is known as a byte, and so we add one single bit to it at the most left hand side or the most important side। ये आगे आप लोग बाद में फिर पढ़ोगे कि why it's the most important side, but again
आप यहाँ पे पैरिटी बिट ऐड कर देते हो एंड देन you see कि आपने काउंट करने हैं कि how many number of ones do you have and how many number of zeros you have. So हम ये add तो कर देते हैं parity bit, but why do we add it? So we basically add a parity bit to make the number of ones even, so that we can have even number of ones. Why am I saying even number of ones and not odd number of ones? The reason behind that is because in the question they clearly stated describe how an even parity check is used. So we need to ensure कि जो हम code explain करें उसके अंदर we are also explaining it in a way which demonstrates कि आपके number of ones are also even. And उसके बाद हम क्या करेंगे? The file is transmitted. So color change कर देता हूँ. The file is transmitted, and then the number of ones are recounted afterwards. Number of ones are recounted afterwards. And now this is the exact same thing. अब हमने क्या करना है? हमने देख लिया कि यार फाइल सेंड कर दी है. And now if any of the byte जो भी हमने फाइल भेजी has an odd number of ones, this is a clear indication कि error has occurred. So अब यहाँ पे हम ये बोल देते हैं if any byte, और ये यूजुअली इट्स बाइट क्योंकि आप फाइल्स भेज रहे हो, बट अगर आप इसको फाइल भी कर दो आई डोंट थिंक सो एग्जामिनर वुड मार्क इट रॉन्ग. बट अगेन दीज आर द कीवर्ड्स, सो कीवर्ड्स के साथ अपने आप को अडेप्ट करवाओ. सो इफ एनी बाइट हैज एन ऑड नंबर ऑफ ones, then an error has occurred for it. And this marks a perfect 4 on 4 for this. How do you get these 4 marks? Firstly, आपको एक mark मिलता है for writing the parity bit part, and you get 1 mark so that you tell that कि आपने even number of ones set किए. Then you get 1 mark for the recounting part, and then finally you get 1 part for explaining that if there is odd number of ones, then this means that there is an error. Say, and this gets you the perfect 4 on 4. So now before moving on to the next question of the next paper, is this specific part of chapter number 2 clear? Yes or no in the chat box, quick. Let me see if there बाकी कोई और question तो नहीं है. Nope. सही है. Perfect. If you guys have any question, how will the odd numbers be checked? If the odds are not checked, then is it possible that there is an... How will the odd numbers be checked? If the odd numbers are not checked, then is it possible? अच्छा देखो, जो हम जब भी इसकी बात कर रहे होते हैं ना पैरिटी चेक्स, उसके अंदर भी ऑलवेज कोई खाली जगह उस पर एक्सप्लेन कर दूंगा. हाँ, जब भी हम पैरिटी चेक की बात कर रहे होते हैं ना, पैरिटी, ये मैंने उस दिन भी बताया था कि कंप्यूटर साइंस में जब भी हम किसी चीज के साथ डील कर रहे होते हैं ना, वी ओनली फोकस ऑन वंस. So all these zeros are basically useless. So even if we have to count the number of zeros, वो अगर odd हो even हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. पीछे रह गई बात कि how will the odd numbers be checked. तो odd numbers का basically ये है कि यार अगर मैं ये बोल देता हूँ आपको कि मैं एक फाइल भेजनी है जिसके अंदर 1010 है, and I'm sending it from person A to person B, and both of these users have agreed to make use of odd parity. Say odd parity. अब सबसे पहले क्या होगा, you are going to be adding a parity bit which is to ensure कि यार इसके अंदर number of bits जो है वो odd in nature हो जाए. अब originally how many ones do we have? We have 2 ones, which is basically even, but because we have agreed on making use of odd parity, so I have to make sure कि यार this becomes odd. तो अगर मैं यहाँ पे एक 1 ऐड कर देता हूँ, now if you count them 1 2 3, it becomes 3 ones, which basically mean it's odd now. And now I'm going to be transmitting this file to user number B. अब user number B क्या करेगा? User number B के पास जब फाइल आएगा, is also going to be counting it. Say 1 1 1 इस तरह आ जाएगा. Now अगर user B के कंप्यूटर के ऊपर 1 1 0 0 0 आ जाए, and user B count करके देखे कि यार I have 2 ones, but we know कि 2 is basically even. But what should we be having? We should have an odd number of ones. Why? क्योंकि हम parity odd use करें. So इससे user को पता लग जाता है कि यार there was some sort of an error. But whatever अगर आपके यहाँ पे भी rather than having a 0, हम ये बोल देते हैं कि यहाँ पे आपका एक 1 आ गया, तो फिर क्या होगा? तो 1 2 3 हो गया, तो 3 ones. So this means no error. इसके भी थोड़ी एक्सेप्शंस आती हुआ, आई होप कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. सॉरी yeah, I got it. Sir, can you scroll back to the question? Only saw 3 points. Oh yeah, of course, no worries. Here you go. देखो, now is it clear? Usually हम zeros को बिल्कुल deal out करते ही नहीं है. So for us, whenever we are dealing with computers, the number of zeros are basically useless. आपको उसकी कोई
वैल्यू है ही नहीं. So there is no importance of zeros. You only have to focus upon number of ones. समझ गए? If there are any other questions, you guys can literally ask it. मुझे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं होता. I appreciate because your concepts should get clarified. That is the most important part of this whole thing, right? So yeah, so all perfect. So now let's move on to the next paper. We are now going to be looking into summer 25 paper number 13. सही है. So we hope इसके अंदर भी हमें इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन मिल जाए for related to chapter 2. And this is not chapter 2. This is for no, 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 no. Okay, apparently we don't have any question from chapter 2. Let's go to paper 11 then. Let's look this and okay, no again. Acha. Okay, yeah, we do have a question here. So now we're going to be looking into this specific part, question number 4 of the summer 25 paper number 11, which is basically again related to chapter 2, transmission. Data transmission is something जो कि examiner को बड़ा पसंद है. So it's really advised कि आप लोग अच्छे से उसको वो कर लो. And you guys should be well aware of. अच्छा, अब इसमें आप लोग ने prepare क्या करना है? थोड़ा सा मैं अगर आप लोग को quick idea दे दूं, you all should be well aware of when to use serial duplex. Question 6 to okay, I haven't seen that. My bad. Thank you for identifying though. We'll get to it after this. Okay, we'll get to this. But जो आपके chapter number 2 है उसके अंदर you should always be focusing upon when should we be using serial, when should we be using full duplex, half duplex कब करना है, simplex कब करना है, serial कब करना है, parallel कब करना है. आपको ये पता होना चाहिए benefits of each of them, ये आपको पता होने चाहिए. उसके बगैर जस्ट सेकंड साकिब, इसके बगैर आपको ये पता होना चाहिए कि व्हेन should error methods be implemented, like कौन से सिनेरियो में कौन सा बेहतर होगा and how are they implemented. These are very important alongside the routers concept and the start जो पे packets की बात है. All of these stuff should be very 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 much clear to you, otherwise you're going to be facing problems in chapter 2. So Sakib, sir, I have a question from you now. How do I prepare for my midterms and not so much? Okay, see, if you're not comfortable with paper number 1, my advice will be start off with the book. But before the book, I would also advise you कि यार हो जाएगा इंशाल्लाह, don't worry. Paper number 2 का, paper number 1 का जो main method है, it's firstly you understand the concept. Now it's up to you whether you want to go with some teacher's course recorded lectures or you want to watch some YouTube video, and if it's up to you, you can also go with the book अगर आपको book की समझ आती है. Firstly, understand concept, build the concepts, and once you're done with concepts, आपने चले जाना है topical पे. And then you're going to be doing at least 15 to 20 questions, especially अगर आपको टॉपिक मुश्किल लग रहा हो. Why? Because in the first 5 to 10 questions you're going to feel like मुझे कुछ नहीं आता. I know this, I have been through this phase, I'm very well aware that आपको लगेगा I don't know a single word. But then you try to answer each of them and you won't be able to answer even a single question. But you're going to be looking at the marking scheme and slowly you will understand कि okay, I would 100% recommend the book. Book is very necessary, especially making use of the book alongside the syllabus. सही है? आपने बुक पढ़नी है लेकिन सिलेबस भी साथ साथ पढ़ना है ऑफिशियल कैम्ब्रिज का, so that you know that you are not studying anything else. This is very important. Book is there. When I was giving my AS level computer science, so during that time I guess I did not read the book and it did cost me a bit. Why? Because there was a question which eventually later on people were saying कि यार ये directly book से test हुआ था. So like a concept which was there in the book as an example, जो कि शायद मुझसे वो हो गया miss. But when I was preparing for my IGCSE O-level computer science, definitely the workload was way less than that when I had my A-level subjects, क्योंकि A-level में I took some extra subjects, एक extra भी उठा लिया था, which was very difficult. तो oh yeah, YouTube videos are good. YouTube videos से concept बनाओ, and for after watching YouTube videos, go do read book. Like this, that's one advice I would recommend. Definitely don't read the book before watching the videos. उस तरह काफी मुश्किल हो जाता है. Try to do give it a read. Like I would 1%, 100% recommend that. See, and then do topicals to an extent जहाँ पे आपको लगता है now I know every single type of questions. Repeat the same thing for the 6 topics, and literally you will be very much good to go. Paper number 1 is literally I guess 20 days की game. अगर बंदा सही से करे 20 दिन से भी कम
लग सकते हैं अगर बंदा फुल लॉक इन हो। आप आराम से अपने ग्रेड को 0 से लेकर टू अ वेरी गुड एक्सटेंट इंप्रूव कर सकते हैं। पेपर नंबर 2 के लिए इंशाल्लाह यू नीड प्रैक्टिस। पेपर नंबर 2 इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और पेपर नंबर 2 यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप सबसे पहले आप अपने बेसिक्स को बिल्डअप करें। सो यू शुड नॉट डायरेक्टली so after your topical solving, should I read? Yeah, definitely. I would 100% recommend. I would suggest कि यार अगर अभी हम chapter number 2 कर रहे हैं, so you should start revising. If you have some notes of chapter number 3, आप उनको देख लो, and if you have time over the weekend, अगर मैंने chapter 2 करा दिया, 3 करा दिया, तो आप उसकी reading कर लो. Quickly skim through it, okay? Not necessary. No. You should focus on ELEs once your whole course is completed. उससे पहले आपने ELEs को touch भी नहीं करना. ELEs are only when your course is done, when your whole topicals are done, and you're just like 1.5 months before or maybe 1 month before your exam, and then आपने वो कर देना है, and you will be very much good to go. सही है। उसके बगैर ये कि यार how do you get good in pseudocode? So pseudocode के लिए यार I would recommend firstly that if you have some sort of, by the way, my course will be starting from the 1st of December. So if anyone wants to join that, especially if you're aiming to appear in May, June 2026, so that will be very comprehensive and it's going to cover everything from the start till the end. We will be doing multiple past paper and topical questions together. So you also have that option. But apart from that, if you have to prepare for paper 2 on your own, so aap log ye karo, try to build your basic skills. Try to understand how all those basic codes, जब आप chapter number 7 book पे open करते हो या whenever you watch any video on YouTube, you will see that आपको काफी ऐसी चीजें मिल जाएंगी कि बहुत बेसिक चीजें पढ़ा रहे होते हैं कि like how do you use a for loop, how do you use a while loop, what is an array, how do you add elements into array, how do you output elements into array. Make sure कि आपकी वो चीजें अच्छी हो जाए. Once you understand those smaller chunks, you're going to know कि when you go to those major programs like that of 15 mark, उसके अंदर वही concepts rebuild हो रहे होते हैं. And also to my kids who just were going for the October-November examination, उनको मैंने यही बताया था कि those small parts are so important that अगर आप उसमें से कुछ हद तक भी से implement कर लो ना, you literally get like 8-9 marks out of 15, which is very good if you feel like कि आपका 15 mark का preparation is not up to the mark. So by the way, Saqib, can you tell me when will you be appearing in your exam? Are you going for May June 2026 or are you going for, well, you don't have an other option. So are you talking about, yeah, exactly. If you're going for May June 2026, bro, listen to me. The idea which your teacher told you, that is something which might work only for your final exams, जो आपके mocks होंगे. But remember, you have to prepare for that A star, maybe for that distinction in your actual CIEs. You don't have to do it for like just a final exam, right? आपके यहाँ पे A star, I had an A star in my final mocks, but I ended up with an A in the actual CIs in Urdu. Why? क्योंकि final के लिए मैंने सही था किया था, but not for my what do we call it? अपना क्या कहते हैं CIs के लिए उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं थी. So I would recommend यार बेसिक से अपने concepts build करो. Don't rush. You have enough time. Like you need to slowly build your concepts, do topicals, and like for your final exam, I would advise कि यार if tomorrow is your paper, आप उससे पहले सारे concept कर लो. एक दिन पहले जाके just try to do as many papers as you can. So even if there are 3 papers, 4 papers, you will be very much good to go, just so that you know कि paper करने किस तरह. ऐसे ना हो कि आप अभी अपने लिए पूरे past paper booklets मंगवा के you start off with from maybe 2019 and rush up to 2025. That's a blunder in my opinion. सही है. Past papers are something which are only meant to be done in the very end before your actual exam, so that you get familiar with the whole ideology behind how to approach a question. You should not be doing that. I don't have a topical booklet, but I do have multiple topical questions. So inshallah they will be shared over time. मैंने पहले भी जो अपने topics के वो किए थे, but that's a good idea, Rayan. I will get on to it inshallah, and I will start compiling topical questions, and I can share that with you guys. आप लोग उसको slowly practice करते जाना. You will be very much good to go. What should I start? First paper, go with paper number 1 and then end it with paper 2. Go in the straight flow. Say so flow ke saath chalo, you'll be very much good to go. So let's get back to the questions. काफी वो हो गई है, but इसी के साथ maybe a little different, but I'm glad it's because of you. So firstly, I would like to thank you. Of course, thank you so much, man. No worries at all. I hope you all are also in the counseling group. If not, you can send me a link later on. I can add you to the counseling group too, and that's very much
platform where we share pretty useful stuff. So you can reach out to me later on, Sakib. Then I can have a detailed talk with you because मैंने अभी ये खत्म करना है and I have a deadline at 11:55 तो मैंने उसके लिए भी जाना होगा. But at the same time, if you are someone सही है who might be appearing in May June 26 and feels कि उनके concepts are not strong in computer science, then I'm assuring कि do give a look into our course which will be starting from the 1st of December. We will be offering 1 week free demo classes and उसके अंदर आप लोग आराम से ना जरा देख लो how do you understand the concept. आपको different लग रहा है या नहीं? Because I always say this, computer science is very easy. It's just people do not teach it the right way. Computer science has a very different approach. आपको concept पहले समझाया जाएगा तो आप सब कुछ कर लेंगे. What usually people do is like the way the same case is being applied up here, where you are being recommended to do ELAs directly, whereas maybe your concepts are not up to that mark. But what in reality you should be doing is that आप आराम से concepts build up karo, and then you can get on to the ELE. Say, so now let's get back to the same question, question number 4, which is saying a restaurant has an electronic ordering system, and that the system allows customer to select the food, okay, and that the data is transmitted across the network to a computer in the restaurant kitchen. Now, this system is making use of a serial full duplex data transmission, which means that a single wire is being used between the two computers. But full duplex means that एक ही time के अंदर data is being sent from A to B, and at the same time data is being sent from B to A during the same time. If you have any other questions, yeah, just reach out to me later on. फिर कर लेंगे से. Now, the first part says कि give 2 reasons why serial full duplex is a suitable data transmission method for the data. अब again ये ऐसी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि what's the benefit. So यार जब भी हम serial का use करते हैं ना, there is one point जो कि वही है कि the bits don't arrive skewed, they arrive in order, and so there is less chance of error. तो एक तो मैं ये कर लेता हूँ why serial full duplex, तो एक point में serial का बता देता हूँ, so that the bits arrive in order. या फिर अगर मैं थोड़ा इसको अदर अल्फाज में लिखना चाहूँ तो मतलब slash means कि you can also write it so that the bits are not skewed, so that the bits are not skewed. And then the second point will be, let's say, for the full duplex, like why am I making use for full duplex? अब full duplex में क्या आता है? So that yeah, definitely data मैंने दोनों टाइम में एक ही गो में it is required, because definitely मैंने customer से kitchen तक order भी भेजना है, at the same time मैं भी kitchen से मैं order भेजना चाहूँ कि यार this item is not available, तो वो मैं भेजना चाहूँ. So if I have to send data in both the direction, या फिर मैंने कोई नोटिफिकेशन ऑफ एरर्स भेजनी है टू द कस्टमर, तो मैं कैसे करूंगा? तो इसके लिए आई हैव टू मेक यूज ऑफ फुल डुप्लेक्स, एंड क्योंकि ये रेस्टोरेंट है, ज्यादा से ज्यादा रश होगी, तो इन अ सिनेरियो लाइक दैट तो आई नीड टू मेक श्योर कि दोनों एक ही टाइम में ट्रांसमिट हो रहे हो, क्योंकि अगर एक टाइम में एक और दूसरे टाइम में दूसरा, काफी लैग आ सकते हैं, लेटेंसी हमें नहीं चाहिए. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट इट एज लाइक एक तो मैं ये पॉइंट लिख सकता हूँ कि डेटा needs to be transferred both direction. But the point जो मैं recommend करूंगा वो ये है कि आप इसमें एरर वाली बात कर दे. एरर वाली बात क्या होगी? सो नोटिफिकेशन, ताकि मतलब अगर आपके कोई नोटिफिकेशन आए ऑफ एरर, वो दोनों कंप्यूटर से एक दूसरे को सेंड किए जा सके. सो यू कैन से दैट सो दैट द notification of errors can be sent back to the computer. And this is a valid reason why you might be willing to have a full duplex transmission method. See? Now the second part says, give one improvement that would be made to the data transmission if parallel transmission is used instead of serial transmission. Improvement क्या होगी? इंप्रूवमेंट एक ही है कि यार देखो, ओरिजिनली अगर एक वायर यूज हो रही है तो इसके ऊपर एक ऑर्डर सेंड हो सकता है, राइट? सो मतलब अगर आप लोग में से कोई आए, दे माइट बी लाइक सेंडिंग वन ऑर्डर व्हिच माइट बी ऑफ लाइक लेट्स से जिंगर, एंड देन उसके बाद अगर आपने कोई शवारमा का किया तो पहले जिंगर इज गोना गेट ट्रांसमिटेड एंड देन आफ्टरवर्ड्स शवारमा इज गोना कम आउट. बट व्हाट पैरेलल ट्रांसमिशन इज कि आपके पास मल्टीपल वायर्स हो जाती है. So when you have multiple wires like this, you can send zinger from this, shawarma through this, and maybe if you want to send like maybe some platter, तो उसको आप यहाँ से इससे भेज दें. So what the benefit is, originally, isn't there a high chance? Yeah, there is a high chance. But now in this scenario, they did not ask you to identify any weakness. इन्होंने बोला आप सिर्फ improvement दो.
द इम्प्रूवमेंट पार्ट इज कि यार डेफिनेटली अगर आप एक टाइम में पहले एक को भेजने के लिए 2 सेकंड लग रहे थे तो 3 के लिए 6 सेकंड लग रहे हैं, लेकिन अब वो 6 के 6 3 के 3 2 सेकंड में हो रहे हैं. सो द डेटा इज बीइंग ट्रांसमिटेड एट अ फास्टर रेट. दैट्स द बेनिफिट. बट एज रेयान सेड, बिल्कुल there is a higher chance of skewness or the data being out of order, but because the examiner did not state कि यार आपने क्या कहते हैं इसकी कोई वीकनेस आइडेंटिफाई करनी, तो हमने यहाँ पे उस बात को इनटू कंसिडरेशन नहीं लाना. हमने जो जनरल याद की है कि यार इट्स गोना इंप्रूव द परफॉर्मेंस, हम वो करेंगे क्योंकि इन्होंने क्लियरली बोला हुआ है कि आप सिर्फ इंप्रूवमेंट की बात करें. सो आई विल बी राइटिंग इट एज द डेटा मे बी ट्रांसमिटेड फास्टर. द डेटा मे बी ट्रांसमिटेड फास्ट. ट्रांसमिटेड फास्ट. समझ गए? और परफेक्ट. Now, going on, अब आपके पार्ट बी आ गया. अगेन checksum is used to check the data for errors after transmission. अब ये जो आ गया, दिस इज अगेन एरर डिटेक्शन. अब एरर डिटेक्शन के 4-5 मेथड्स है, उनमें एक तो कर लिया, एंड दिस इज नाउ द सेकंड वन. अब checksum के अंदर क्या होता है? checksum इज बेसिकली उसके अंदर ये होता है कि यार आपके पास जो ओरिजिनल वैल्यू होती है ना, उससे हम एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कोई सेट एल्गोरिथम के थ्रू, एंड देन दिस वैल्यू इज सेंट विद द डेटा, एंड फिर वो हम रिकैलकुलेट करते हैं, फिर हम कंपेयर करते हैं. सो लाइक इट वर्क्स इन अ वे कि इफ आई हैव मे बी सम कोड 101011, आई पास दिस बाइनरी वैल्यू थ्रू सम सॉर्ट ऑफ एल्गोरिथम से, एंड देन व्हेन इट गोस थ्रू दिस एल्गोरिथम मेरे पास एक वैल्यू आ जाती है. Now what I do is कि I transmit the value plus the binary to the person, to the user, जिसको भी मैं भेजना चाहता हूँ, user B को लेट से, and then the user B recalculates the value using the algorithm, the same algorithm जो हमने पीछे यूज किया ना, ये algorithm आपस में डिसाइड कर लेते हैं. लाइक मैं बोल देता हूँ कि यार आई विल बी यूजिंग XYZ algorithm, और जिसको मैं भेज रहा हूँ उसने भी XYZ algorithm यूज करना है. So we kind of have decided it prior to sending the data. सही है, आपने ये कर दिया, and then it goes on कि आपने यहाँ से वो आपके पास आ गया डेटा, it's recalculated, and then you gonna compare the values. So अब originally हम देखेंगे कि यार जो इसके पास डेटा है, इससे अगर let's say I get the value as maybe 72, and then the user भी recalculates it, and उसके पास आ जाती है maybe ये 101011 की जगह उसके पास आ जाते हैं 101100. Now definitely this is going to result in a wrong value, right? क्योंकि इसके थ्रू अब आपकी वैल्यू क्या आएगी, इसके थ्रू आपके पास वैल्यू आ जाएगी मे बी 65. अब वो जब कंपेयर करेगा 65 is not equal to 72, and when it's not equal to 72, this is going to indicate यार एरर हुआ है या नहीं, yes or no. समझ गए? So this is how you're going to be making use of checksum. सही. So हम इसको थोड़ा हमने इस प्रोसेस तो एक्सप्लेन कर दिया ना. हाउ डू आई नो दिस? बिकॉज आई मेड दीज मैप्स. आई अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बाय क्रिएटिंग सच मैप्स व्हिच डायरेक्टली एक्सप्लेन कि यार क्यों कुछ ये स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं. सो वंस यू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट यूजिंग अ स्पेसिफिक मैप, यू गोना सी कि यार इट्स वेरी इजियर टू मेमोराइज पॉइंट. सो सबसे पहले मैं ये करूंगा कि आई विल बी राइटिंग द checksum जो कि एक स्पेसिफिक वैल्यू है उसको हम कैलकुलेट करेंगे. सो द checksum इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेटा, calculated from the data and using what? From the data, using a set algorithm. अब ये एल्गोरिथम की बात जरूरी है. इट्स जस्ट लाइक अगर मैं ये बोलूं कि आपने हर वैल्यू को ना डिवाइडेड बाय 10 करना है, नाउ दैट्स एन एल्गोरिथम. मैं डिवाइडेड बाय 10 करूं, जिसको मैं बेचूं उसने भी डिवाइडेड बाय 10 करना है. सो इट्स सॉर्ट ऑफ आई एम मेकिंग यूज ऑफ अ सेट एल्गोरिथम. सो द checksum is calculated from the data using a set algorithm. एंड उसके बाद में क्या करता हूँ, एक सेकंड यार ये तो इधर हो गया. या आप सबसे समझ नहीं आ रही? कौन सा वर्ड नहीं आ रहा? इज माय ऑडियो क्लियर गाइस? इज माय ऑडियो ऑडिबल? या ओके, चलो फिर से रुको. हाँ, मुझे एक बात बताओ. आपके पास एक फाइल है, लेट्स से आपके पास एक फाइल है, फाइल ए. ओके, दिस फाइल ए हैज अ बाइनरी ऑफ 10110. लेट्स से आपकी 10110 एक फाइल है. मैं क्या करता हूँ, मैं इस बाइनरी कोड की या 1108 बिट बना दिया. सी व्हाट आई डू इज कि मैं इसको पास करता हूँ किसी कोड से. कोई एक कोड है, वो कोड क्या कर देता है, वो इसको ना कोई इसके साथ वैल्यूज ऐड कर देता है, सब्ट्रैक्ट, इंक्रिप्शन. जैसे हम करते नहीं है कि यार मैं यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ तो हैकर आके इसको मे बी कन्वर्ट कर दे स्टार स्टार हैशटैग इंक्रीज प्लस माइनस, इस तरह कुछ बना देता है. इस तरह मैं इसको ना
इस तरह मैं इसको ना कन्वर्ट कर देता हूँ, सही। जब मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये जो मेरे पास आ गई, ये एक लेट्स से मेरे पास इंक्रिप्टेड वो आ गई या कोई वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से ये जो वैल्यू आई, ये किसी कोड के थ्रू आई है ना, तो चेकसम के अंदर होता ही है कि आप इसको यहाँ से वो बाईपास करते हैं, आपके पास एक कोड आता है विच माइट बी लाइक 72, एंड फिर आप ये दोनों वैल्यूज ट्रांसमिट करते हैं। आप ये दोनों वैल्यूज ट्रांसमिट करते हो। आप ये ट्रांसमिट करने का मतलब ये कि आप उसको सेंड करते हो टू द अदर यूजर, एंड वो अदर यूजर फिर क्या करते हैं, अदर यूजर अब मतलब आपके कंप्यूटर पे वैल्यू आ गई, आपके कंप्यूटर के ऊपर भी यही वैल्यू आ जाएगी, राइट। अगर करेक्टली ट्रांसमिट हो गए तो आपके कंप्यूटर के ऊपर भी यही आ गई। अब हमने पहले से, क्योंकि हमें एक दूसरे का पता है, हमने कोड पहले से डिसाइड किया होता है, तो आप उसी कोड को रीयूज करके फिर से एक वैल्यू डिफाइन कर देते हो, जो कि क्योंकि बाइनरी सेम है, इसी बाइनरी से हमने वैल्यू एग्जीक्यूट की है, सो आई एम गोना बी गेटिंग द सेम वैल्यू। And now I'm be comparing कि यार जो मेरे पास ये बाइनरी आई, इसके साथ मेरे पास वो वैल्यू भी आई, तो is this 72 from this part, is this 72 from the sender's part equal to the 72 जो हमने रिसीवर के एंड पे किए? If it is same तो this means कि यार आपका वो एरर फ्री है, but if it's different तो फिर इसका मतलब है कि error has occurred। समझ गए? This is what we basically denote as चेक सम। तो अब इसी को हम यहाँ पे एड्रेस कर रहे थे कि अब आपने, यार थोड़ा सा स्लो करना है, तो अब इसमें आपने करना क्या, आपने ये बताना है कि सबसे पहले द चेकसम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेटा यूजिंग अ सेट एल्गोरिथम। फिर आपने क्या करना है, आपने उसको ट्रांसमिट करना है। सो द चेकसम वैल्यू इज ट्रांसमिटेड alongside the file, या अलोंगसाइड द डेटा कर दो, क्योंकि यहाँ पे डेटा यूज है तो आप भी डेटा कर दो, अलोंगसाइड द डेटा टू द यूजर, द रिसीवर कर दो टू द रिसीवर। अब जब वो चला जाएगा एक दफा रिसीवर के एंड पे, तो अब वो क्या करेगा, द वैल्यू इज रिकैलकुलेटेड बाय द रिसीवर। सो हम अब रिसीवर एंड पे क्या होगा, द वैल्यू इज रिकैलकुलेटेड, बाय द रिसीवर, the checksum value is then, no, the checksum, the calculated value is then, is then compared with the initial checksum value, some value, and if similar, if the two values are similar, this means no error has occurred. But if they are not, then this means an error has occurred. And this will get you a perfect inshallah 5 on 5। समझ गए? अब इसके अंदर आपने बस यही सारा मेथड एक्सप्लेन करना है, फुल डुप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स। यार मैंने बाय द वे दीज आर सॉर्ट ऑफ टॉपिकल क्वेश्चन, सो इसके अंदर ये है कि जो अगर आपको कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन के रिलेटेड है वो हम देखा करेंगे। दीज आर नॉट मेंट टू बी ऑनेस्ट, क्या कहते हैं इसमें आपको कॉन्सेप्ट का वो, बट लेट्स सी इफ वी हैव टाइम तो हम कर लेते हैं। ओके, सो अब द सेकंड पार्ट से आइडेंटिफाई वन अदर डिटेक्शन मेथड दैट कुड बी यूज्ड। सो आपके पास जो पॉसिबल वो है, उसके अंदर हमारे पास पैरिटी बाइट आ गया, एक पैरिटी बाइट हो गया, या फिर आप अगर इफ यू हैव स्टडीड द टॉपिक यू वुड नो कि आपके पास एको चेक भी हो सकता है, ARQ भी एक मेथड है, सो ऑल ऑफ देम कैन वर्क, सही। बट चलो आप एको चेक और पैरिटी बाइट की रखो, दोज आर फाइन, सही। ऑल्सो आई वुड एक्सपेक्ट कि जो कमिंग वीकेंड आ रहा है उसके अंदर आप लोग ना जो अपकमिंग जो भी मैं वीडियो करूंगा ना जिसकी क्लास, तो उसका मैं मैसेज सुबह कर लेता हूँ, या आई वुड टेल यू कि कल हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो ट्राई टू हैव अ लुक एट इट्स नोट्स, सो यू गाइस शुड अंडरस्टैंड कि बिकॉज दीज आर नॉट कॉन्सेप्ट क्लासेस, दीज आर टॉपिकल क्लासेस, सो वी आर मोस्टली गोइंग टू बी फोकसिंग मोर ऑन द क्वेश्चन एस्पेक्ट, सी। So now coming to part C, a customer can also order food from home using the internet. The data from their order is broken down into packets. Now this is the packets part जो मैं बता रहा था, and it is transferred across the network. Take one box to show which item would not be included in the packet header. अब ये again ऐसी चीज है कि ये आपको मेमोराइज करनी होगी कि क्या कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है। So जो आपके पैकेट हेडर है उसके अंदर आपका एड्रेस इंक्लूड होता है,
दिस इज इंक्लूडेड। आपका ओरिजिनेटर एड्रेस भी होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस भी होता है, पैकेट नंबर, तीनों होते हैं। बट क्योंकि एग्जामिनर ने बोला कि यार कौन सा नहीं होगा उसको आपने टिक करना है, तो आपका जो पेलोड है दैट इज नॉट इंक्लूडेड। ये जो पेलोड आपका होता है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर हेडर, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर हेडर। अब आपको पता होना चाहिए कि पेलोड किसका पार्ट है, तो इस तरह के पॉइंट्स आपने याद करने कि पेलोड किसका पार्ट है। अगेन दिस इज समथिंग व्हेन यू स्टार्ट रिवाइजिंग द टॉपिक, यू हैव अ प्रॉपर डायग्राम ऑन द बुक। सही, उस बुक के अंदर जो आपको डायग्राम गिवन है उसके अंदर क्लियरली गिवन है कि यार दिस इज अ पेलोड, दिस इज अ ट्रेलर, दिस इज दिस, इसके अंदर ये चीज है, इसके अंदर ये चीज है, इसके अंदर ये चीज। सो इट्स ऑलवेज एडवाइस इसीलिए कि आप बुक को जरूर पढ़ें। नाउ द सेकंड पार्ट सेज कि यार द पैकेट्स ऑफ डेटा may need to be reordered when they arrive at the computer in the restaurant's kitchen. Explain why the packets of data may need to be reordered. So it's basically कि यार अगर आपने यहाँ से भेजना हो to B, तो अगर आपने टॉपिक देखा हो तो यू विल नो बेसिकली वी हैव मल्टीपल नोड्स, आपकी इस तरह के नोड्स होते हैं। सो योर डेटा गोज कैन गो लाइक फ्रॉम दिस टू दिस टू दिस, और इट कैन गो फ्रॉम दिस टू दिस टू दिस, और इट कैन गो फ्रॉम दिस टू दिस, लाइक इट्स लाइक अ वेब। सी आपका इस तरह एक वेब बन जाता है। सो डेटा कैन लिटरली गो एनीवेयर। सो मतलब आपका डेटा अगर इफ आई हैव टू गो, आपका डेटा कुड गो लाइक दिस, यहाँ से जाके ये थ्रू दिस वे, और योर डेटा कैन गो फ्रॉम दिस वे, डिपेंडिंग उसको कौन सा शॉर्ट पड़ता है, या इट कैन गो लाइक दिस, सही है, या इट कैन ऑल्सो गो लाइक दिस, डायरेक्ट डायरेक्ट। तो अब ये जो इस तरीके से अलग अलग रास्तों से जा रहा होता है ना, तो इसकी वजह से ये होता है कि आपका डेटा यूजुअली अराइव in wrong order, see, क्योंकि each packet could take a different route, so some packet may take longer for others to arrive, सही। so same point यहाँ पे आ रहा है कि हमने इसके अंदर यही बात बतानी कि why is it required to be reordered, because some each packet takes a different route, each packet takes a different route, takes a different route, एंड जब अगर हमारे मुख्तलिफ आ रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें कुछ होंगे जो कि शॉर्टर जल्दी पहुंच जाएंगे, जो कि शायद एंड में हो, या फिर सम पैकेट्स क्या कहते हैं मे टेक लॉन्गर देन अदर। तो इसलिए हम बोलते हैं ईच पैकेट टेक्स अ डिफरेंट, एंड सो सम पैकेट्स may take longer to transmit than others. Hence there is a need for restore. Hence there is a need to reorder. There is a need for the packets to be reordered. Packets to be reordered. And this marks the end of the question. You get 2 on 2 for this. So आपने इसको सिर्फ concept explain करना है, and that is it. So we are done with this question too. Inshallah, we will be having most probably agar class हुई कल, we will be continuing with chapter number 2 की ही questions. And Saqib, we can then have a quick discussion about full duplex and half duplex tomorrow, or in the next class. I can come 5 minutes early. So be there at 8:55. We can have a short talk on what's duplex and half duplex. Yeah, sure. You know. सही। एंड वी आर गोना बी स्टार्टिंग ऑफ विद द क्वेश्चन जो कुरतलन आपने बताया था रिगार्डिंग द पेपर नंबर 11 आई गेस, 13 या 13। सो उसका वो कर लो, सही। सो जस्ट टेक अ नोट्स, इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट वो ले लो, otherwise we are done with today's class. I have to leave then, सही है। and see you guys inshallah in the next class. I have to see. I have a quiz on Tuesday too, so इस वजह से I'm not sure कि आप I might be taking the class, but most probably I will. Inshallah. Yes, yes, Saqib. Yes. बोलो बोलो. Well, let me stop the recording though. वो क्यों लंबी हो रही है?